Children, today I will teach you third poem. The name of this poem is On Blindness. This poem is composed by John Milton. Before starting the poem, I think it necessary to give you a brief introduction about the poet. John Milton is a well-known figure to the students of English literature all over the world. John Milton was born in London on 9 December 1608. His father was a lover of literature and art. He wanted Milton to enter the church, but Milton did not like it. Milton was educated at St. Paul School and Christ College, Cambridge. He got his master's degree from there. He was appointed Latin secretary to the government, and he held this post till the restoration of monarchy. Milton traveled from 1637 to 39 to Germany, Switzerland, and Italy. A great tragedy, a great calamity befell upon Milton when he was only 44 years old. That's in 1652. What was this calamity? It was that he lost his eyesight. He became blind. There is a story behind his blindness. Milton wrote two books which have earned international renown for him. The names of these two books are Paradise Lost and Paradise Regained. The theme जी। Milton wrote two books which have earned international renown for him. The name of these two books are Paradise Lost and Paradise Regained. The writing of these two books was not an easy task. Actually, it was an uphill task which Milton had undertaken. He had to do immense labor for it. He had to pore over the pages of the Old and the New Testaments. The doctors advised him against excessive works, but Milton did not listen to their advice. Consequently, Milton became blind in the age of 44. In this poem on blindness, Milton expresses grief over his premature blindness. In the beginning, he thinks that God had given him great God had done him great injustice by depriving him of eyesight. But in the end, he surrenders himself to the will of God. The criticism of God turns into praise of God. This poem is a sonnet. Sonnet is a poem which consists of 14 lines. There are 14 lines in this sonnet, in this poem. It follows the Italian pattern, and its rhyming scheme is ABA, ABA, CD, E. Now I am reciting the poem. When I consider how my life is spent in half my days in this dark world and void, and that one talent which is dead to hide, large with me useless, do my soul more bent to serve therewith my Maker, and present my true account, lest he returning child, that God exact day labor I denied. I fondly ask, but patience to prevent the murmur soon replies. God doesn't need either man's work or his own gifts. Those who bear his mild yoke, they serve him best. His statistically thousand at his biting speed,
and post over land and ocean without rest. They also serve who only stand and wait. Now I am spelling the point. First, when I consider, जब मैं सोचता हूँ, हाउ मीन्स किस तरह, लाइट में रोशनी इज स्पेंड इज लॉस्ट, चली गई है। मिल्टन कह रहे हैं जब मैं सोचता हूँ कि मेरी आंखों रोशनी चली चली कैसे चली चली, इट मीन्स पहले इन हाफ माई डेज, मैं आधी उम्र में नहीं पूरी कर पाया, आधी उम्र से पहले मेरी आंखों रोशनी, यानी मिल्टन जो है वो आधी उम्र में नहीं पूरी कर पाए थे कि वो अंधे हो गए थे, 44 साल की उम्र में अंधे हो गए थे। दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, और ये चौड़ी दुनिया जो है उनके लिए अंधेरे हो गए थे, क्योंकि एक अंधेरी हो गई दुनिया में, उनके लिए अंधेरा रहता है, हो गया था। क्योंकि अंधे आदमी के लिए सभी कुछ अंधेरा होता है। जैसे कि एक पोएम में एक अंधा लड़का कहता है, पोएम में कहता है, माई डेज एंड नाइट माई सेल्फ आई मेक व्हेनेवर आई वेक आर स्लीप। एक अंधा कहता है कि मैं अपने दिन रात खुद बनाता हूँ, जब तक मैं जगता रहता हूँ तब तक दिन रहता है, और जब मैं सो जाता हूँ तो रात हो जाती है। इसी तरह मिल्टन के लिए पूरी दुनिया अंधेरी हो गई, अंधकार में हो गई, वो बहुत दुखी हुए। एंड दैट वन टैलेंट, टैलेंट कहते हैं खूबी को, विच मिल्टन कहते हैं गॉड ने उन्हें कविता लिखने की खूबी दी थी, विच इज दैट टू हाइड, हाइड में छुपाना, और उस खूबी को छुपाना मौत के समान है। लाजमी में पड़ी हुई है, विद मी यूजलेस, ये मेरे पास बेकार पड़ी हुई है। डू माई सोल मोर बेंट, हालांकि मेरी आत्मा बहुत इच्छुक है, टू सर्व माई मेकर, कि मैं अपने मालिक की सेवा कर सकूं, यानी अल्लाह की गॉड की सेवा कर सकूं, एंड प्रेजेंट माई ट्रू गॉड, और अपना सही हिसाब किताब पेश कर सकूं। लीस्ट नहीं तो मरने के बाद मुझे वो डांटेगा। इसमें क्या बताया गया? इसमें बताया गया कि मिल्टन जो थे वो अपनी आधी उम्र में नहीं पूरी कर पाए थे, वो अंधे हो गए, पूरी दुनिया के लिए अंधकार में हो गई। उन्होंने सोचा है कि गॉड ने उसकी तारीफ में कविता लिखने का उपहार उन्हें दिया था, लेकिन वो अंधेपन के कारण इस उपहार का प्रयोग नहीं कर सकते थे, और वो उपहार उनके पास बेकार पड़ा हुआ था। वो एक बाइबल की कहानी याद करते हैं। बाइबल में वाकया आता है कि एक धनी व्यापारी लंबी यात्रा पर गया, और यात्रा पर जाने से पहले उसने अपने तीन नौकर थे, तीनों नौकरों को कुछ पैसे दिए और उनसे कहा किसी काम में लगा देना। उन दो नौकरों ने उस काम को, उस पैसे को, सिक्के को काम में लगा दिया और उनसे बहुत पैसे पैदा कर लिए। एक नौकर जो था उसने सिक्के का इस्तेमाल नहीं करा, उसने ज़मीन में काट दिया। जब मालिक वापस आया तो उसने उस नौकर को बहुत डांटा, जिसने उसके दिए हुए पैसे का इस्तेमाल नहीं किया। मिल्टन सोचते हैं, जब अपना गॉड ने मुझे कविता लिखने का उपहार दिया था, मैं मरने के बाद जब गॉड के पास जाऊंगा तो गॉड मुझे भी डांटेगा और कहेगा कि तुमने मेरे दिए हुए चीज का, तोहफे का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। अब मिल्टन एक सवाल करते हैं, दैट मीन डज गॉड एग्जैक्ट डे लेबल गाइड डिनाइट। मुझे सवाल करते हैं, क्या गॉड एग्जैक्ट, क्या गॉड किसी ऐसे आदमी से गाइड डिनाइट जिसकी रोशनी छीन ली है, कि गॉड किसी ऐसे आदमी से जिसकी आंखों रोशनी उसने छीन ली है, उससे वो काम करवाना चाहेगा जिसको वो आदमी कर सकता है जिसकी आंखों में रोशनी है। मिल्टन बेवकूफ एक सवाल करते हैं। तो इसमें क्या बताया गया? इसमें बताया गया है कि इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रहे हैं, मिल्टन बिकेम ब्लाइंड इवन व्हेन ही हैड कंप्लीटेड half of his age. The whole world became dark for him. He felt very sad. He thought that God had given him the gift of writing poetry. But on account of his premature blindness, he was unable to make a use of this gift, and it was lying useless with him. Milton remembered a biblical story in which a servant was rebuked by his master for not using the coin which had been given to him. Milton thought that his maker, his master, Almighty God, too would rebuke him on the day of judgment for not using the poetic talent which had so profusely been bestowed upon him. Milton thought that God had done him great injustice by depriving him of his eyesight and then expecting from him a work which could only be done by a person who had got clear eyesight. Okay, next. The murmur soon replies,
God doesn't need either man's work or his own gifts. Those who bear his mild yoke, they serve him best. They serve him the best. His statistic thousand at his binding speed and post over land and ocean. They also serve who only stand and wait. मिल्टन क्या कह रहे हैं? मिल्टन कहते हैं द मरमर. मरमर मीन्स द इनर, द वॉइस ऑफ द इनर सोल, अंतरात्मा की आवाज. रिप्लाई में जवाब देती है. मिल्टन की अंतरात्मा जवाब देती है. क्या जवाब देती है? गॉड डजंट नीड अदर की. गॉड को किसी आदमी के काम की जरूरत नहीं है और न ही उसे अपने जो उसने किसी को उपहार दिया है उसके किसी बदले की जरूरत है. यानी मिल्टन ने पहले सोचा था कि गॉड ने उनको आंखें छीन करके उनके साथ बड़ा अन्याय किया था. लेकिन मिल्टन थोड़ी गौर से सोचते हैं और ऐसा करने के बाद उनकी अंतरात्मा की आवाज़ जो है वो उनको गॉड के बारे में ऐसा सोचने से रोकती है. मिल्टन अपनी गलती महसूस करते हैं. मिल्टन की जो गॉड की आलोचना कर रहे थे अब वो तारीफ में बदल जाती है. मिल्टन कहते हैं कि गॉड जो है वो महान है. मिल्टन की अंतरात्मा आवाज कहती है गॉड महान है. वो केवल महान ही नहीं है बल्कि दयालु और न्याय भी है. उसे किसी आदमी के काम की जरूरत नहीं है. उसे किसी भी शरीर रूप से विकलांग आदमी के काम की जरूरत नहीं है और न ही उसे जिसने किसी को उपहार दिए उसकी जरूरत है. वो लोग गॉड की सच्ची सेवा करते हैं, जिंदगी की परेशानियों को, जिंदगी के तकलीफों को खुशी के साथ में, धैर्य के साथ में, शांति के साथ में बर्दाश्त कर लेते हैं. और आगे मिल्टन कहते हैं कि गॉड जो है वो एक राजा की तरह है. थाउजेंड एट हिज बाइडिंग स्पीड. जैसे कि राजा होता है, हजारों नौकर होते हैं. बाइडिंग में आदेश के अनुसार, वो उसके आदेश अनुसार काम करने को तैयार रहते हैं, दौड़ चलते रहते हैं. इसी तरह गॉड की सेवा करने के हजारों लाखों करोड़ों फरिश्ते हैं और वो हर वक्त उसके आदेश का पालन करने के लिए तैयार रहते हैं. एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन. पोस्ट में दौड़ना, लैंड में जमीन पर, ओशन में महासागर, दौड़ बिना आराम के. जिस तरह राजा के हजारों नौकर होते हैं और वो राजा के आदेश अनुसार काम करने तैयार रहते हैं, वो यहाँ तक कि समुद्र में और जमीन के ऊपर हर जगह चलने को तैयार है. और वो जब तक उसके आदेश का पालन नहीं कर लेंगे तब तक वो आराम नहीं करेंगे. इसी तरह गॉड के भी हजारों लाखों फरिश्ते हैं जो हर वक्त उसके आदेश के अनुसार करना तैयार रहते हैं और वो जब तक उसके आदेश का पालन नहीं कर लेंगे तब तक वो आराम नहीं करेंगे. दे आल्सो सब स्टैंडर्ड पे वो भी सेवा करते हैं जो खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं. कुछ नौकर ऐसे होते हैं जिनको सेवा करने का मौका नहीं मिलता है लेकिन वो हाथ जोड़े खड़े रहते हैं. वो इंतजार करते रहते हैं कि हमें सेवा का मौका मिले लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता है. तो वो भी लोग भी सेवा करते हैं. उनकी सेवा भी कम महत्वपूर्ण नहीं होती. इस तरह गॉड की सच्ची सेवा करने में नहीं है बल्कि सेवा करने के लिए तैयार रहने में है. नाउ स्पिरिचुअल इन इंग्लिश. Milton had previously thought that God had done him great injustice in depriving him of his eyesight and then expecting from him a work which could be done only by a person who had got clear eyesight. But after thinking over the matter calmly and patient, Milton realized his mistake. Now Milton's criticism of God turned into praise. Milton felt that God is quiet. He is also just. He does not need the work of a man. He does not need the work of a physically handicapped person. He does not also need the return of his own gifts. Those men serve God the best who cheerfully bear the miseries of life and are grateful to God under all circumstances. Milton further says that God is absolute. He does not require the work of a man. He is just like a king who has thousands of servants at his command. They will not take rest until they have carried out his orders. Those servants who are also ready to run over land and ocean in order to carry out his commands. Those servants who do not get an active chance to serve only stand with folded hands and wait for their
turn to serve. They render no less important service. Thus, the real service to God lies not in doing an active service, but in preparedness for doing an active service. This poem teaches us a very important moral lesson. It is we should be we should surrender ourselves completely to the will of God. And whatever calamities, whatever difficulties may come in our way, we should bear them with patience. Because it is said that God is with those who have patience. Okay, thank you.